Prime Minister Narendra Modi inaugurated the two-day Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, the state government's flagship global investment summit at Bhubaneswar's Janata Maidan. Chief Minister Mohan Charan Majhi also participated in the event, which aims to position Odisha as a hub for industrial growth and a critical part of India's Purvodaya vision. In his address, Modi emphasized the significance of Eastern India as the country's growth engine, highlighting Odisha's historic role in global trade. He referred to India's past contributions to global economic growth and pointed out that Odisha had been a key trade hub with Southeast Asia during that era. Modi also shared an anecdote from the Indonesian president's recent visit, where the latter expressed a deep connection to Odisha, describing it as being in his DNA. This, Modi stated, reflected Odisha's rich cultural and trade legacy with Southeast Asia, which the state is now striving to revive. The Utkarsh Odisha Conclave has been designed to showcase Odisha's achievements in building a robust industrial ecosystem and to attract investments. Modi also inaugurated the Make in Odisha exhibition, a platform that highlights the state's industrial progress and future potential. The exhibition provides an opportunity for investors, industry leaders, and policymakers to explore the state's offerings as a preferred destination for investment. The conclave features a series of high-profile events including CEOs and leaders roundtables, sectoral sessions, B2B meetings, and policy discussions. It is expected to draw over 7,500 investors from both India and abroad, facilitating targeted interactions across key sectors such as IT, renewable energy, textiles, chemicals, and food processing. 12 nations including Australia, Malaysia, Japan, Germany, Poland, and Cuba have been invited as countries of focus to participate in the event. The Odisha government has set an ambitious goal of securing investments worth Rs 5 lakh crore to transform the state into a global industrial hub. Approximately 100 memorandums of understanding are expected to be signed during the event. Industry Minister Sampath Charan Swain stated earlier that the government's priority extends beyond merely signing MOUs. It is committed to ensuring the implementation of these projects. Through initiatives like Utkarsh Odisha, the state government seeks to bolster efforts towards achieving the vision of a prosperous Odisha, Samruddh Odisha, by 2036 and a developed India, Viksit Bharat, by 2047. पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और उड़ीसा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। To the inauguration session of Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आपकी कर कमल से आज की ये दिव्य और भव्य समारोह की शुभारंभ हो रहा है। आपकी ये सदैव उपस्थित हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आपकी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के लिए प्यार की निशानी है।
पिछले 7 महीने में ये आपकी 5वां आगमन है। हर बार उड़ीसा के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं। इस बार तो आप इतनी बड़ी सौगात लाए हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। 7 महीने पहले पूर्वोदय की जो नींव आपने रखे थे, आज उसी नींव के ऊपर एक मजबूत ढांचा निर्माण होने जा रहा है। इसलिए हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। Stay tuned to Orissa Post Live for more such updates.